तो यहाँ पे बेटा देख लें, मैं एक हाइलाइटर भी यूज कर लेता हूँ. Yazim is a highly skilled shoemaker. He opened CS in 1975 as a sole trader. अब मैं क्या पता है कैसे केस स्टडी पढ़ोगे. I'm going to mark some of the key terms which I think are important. For example, Yazim is a sole trader, which means that he is the sole owner of a business. He does not have any partner or shareholder. He has full control over the business. The main concept of his business is to design and repair shoes. When Yazim set up CS, the main target market was professional people who wanted shoes to wear to work or to dress smartly. So when Yazim set up his business, his main target market was professional people. Who was his target market? Professional people who wanted shoes to wear to work or to dress smartly. Who wanted shoes to wear to work or to dress smartly. He produced shoes using batch production. This means that he makes shoes using batch production. He makes shoes in batches and sold them in his own shop. Each design of shoe was made in a range of sizes and colors. Recently, there has been increase in low-priced shoes produced for mass market. So this means that the people are moving towards low-priced shoes, and the trend have changed, which has reduced Yazim's sale, and this has a direct impact on Yazim's sale. His sales have decreased because of new shoes. It has also reduced the demand for shoe repairs. Yazim's daughter, Aber, is keen to take over running of CS. She has been fully trained in making shoes and feels that it is time for Yazim to retire. Abir thinks that the business should be targeting niche market. Niche market means a specific target audience who have certain characteristics, or who belong to a certain group. And she wants the business to target only specific customers, not masses. She would like to design and produce unique shoes and use price skimming, which means that charging a higher price for your product because it, mainly because of two reasons. Firstly, to earn higher profits, and secondly, to create a perception in the mind of customers that the product is of good quality. Abir is also concerned about the contribution made on each batch of shoes. This is the data for break-even level of output, margin of safety, total variable cost, total revenue. Abir has suggested that CS should adopt a just-in-time inventory management system. So basically, just-in-time inventory management approach means that you are only going to order inventory when there is a need for it. By using JIT, she argues CS would be able to increase its working capital. Working capital means it is the difference between current assets and current liabilities. It shows it shows ability of a firm to pay its short-term expenses, day-to-day running expenses, and avoid having money tied up in inventory that might not be used or sold. One of the biggest drawback of holding inventory is that if you hold inventory and if you buy a lot of goods, then your money will be tied up in inventory, and that money cannot be spent elsewhere. CS currently has large number of shoes on display in the shop. There is also a large amount of their main raw material, which is leather, and must be kept in a climate controlled storage area. Abir has already found a new local supplier which is happy to deliver inventory as required. So Abir has also found a local supplier who is willing to deliver inventory when there is a need for it. In our part A, it says identify one type of training. So we have to just identify. It is a 1 mark question. You don't need to explain anything. You just need to identify. You just need to tell one type of training, any type of training. So you can write induction training,
On the job training, off the job training. Induction training is usually given to workers who recently joined the organization, who are new to the organization. So basically, just to make sure that they get hang of the organization, they know about the working criteria, they know about the different departments, who controls which department. So just to have an idea about the organization, about the working methods, about the people, we give induction training. On the job training is usually given on premises. Off the job training is not exactly on premises. It is given elsewhere, like at a particular institute or at a particular center where a trainer is hired and he teaches the employees about a certain software which is might not be available on the job. Then the next question is explain the term mass market. Acha. We need to understand one thing, that first question and the second one is a general question. So there is no need to relate it with the case study. It simply says explain the term mass market. So you just need to give the definition of mass market, that's it, and you will get 3 marks. So 1 mark is for knowledge and understanding, and 2 marks is for application. You need to give knowledge of one relevant point which is used to answer the question, and for application you need to develop application of one relevant point to business context. So for example, you can say mass market refers to uh, targeting large part of the population or making product for most of the population or market. For example, offering many different sizes, color products, and it is associated with lower prices than a segment or niche market. So just need to give application, and we need to give knowledge and understanding. Knowledge can be, we can say, mass market refers to aiming a product or service at majority of population and a majority of people. And we can give an example. For example, offering different sizes or color of a product. This would be referred as mass market. Offering different sizes or color of products, and it is often, as we can also write, it is often associated with lower prices than a segment or niche market. In part B1, it says refer to table 2.1, calculate contribution per unit for recent batch of shoes. So we need to find contribution per unit. In order to calculate contribution per unit, we need to use the data which is provided in table 2.1. Break-even level of output is 400 unit, margin of safety is 100 units, variable cost is 18,750, total cost is 23,750, total revenue is 25,000, and we have to calculate uh, contribution per unit. We have the total cost. The total cost is 23,750. We have total variable cost. The total variable cost is 18,750. We can find fixed cost. What is the fixed cost? We can simply say total cost equals to fixed cost plus variable cost. So total cost is 23,750 equals to X. Let's consider fixed cost as X plus variable cost. Variable cost is 18,750. So this will become 23,750 minus 18,750 equals to X. Now I can calculate the value of X. 23,750 minus 18,750. So this is 5,000. 5,000 is my fixed cost.
5,000 is going to be my fixed cost. I have break-even level of output. Break-even level of output is 400 unit, and I have to find contribution. So I can simply do break-even equals to fixed cost divided by contribution. Break-even is 400, fixed cost is 5,000 over x. So this would become 400x equals to 5,000. X equals to 5,000 divided by 400. 5,000 divided by 400. So break even will be 12.5 per unit. Sorry, contribution will be 12.50 per unit. I've simply used the formula break even equals to fixed cost divided by contribution per unit. The first thing I've done is I've calculated the fixed cost. So I've used the formula total cost equals to fixed cost plus variable cost. Total cost is 23,750. I will consider fixed cost as X and variable cost is going to be 18,750. So 23,750 minus 18,750 equals to X. X equals to 5,000. 5,000 is going to be my fixed cost. Fixed cost divided by contribution per unit. Let's consider contribution as X, or we can say, give it another name. Let's call it Y or C. Contribution per unit is C. So the value of C is coming out as 12.5 per unit. 400 multiplied by C equals to 5,000. C equals to 5,000 divided by 400, and I got my contribution per unit as 12.50. This is going to be my final answer. Moving on to the next part. The next part says, explain one limitation for CS of using break-even analysis. So we have to give one limitation of using break-even analysis. So, acha, firstly, I also need to tell you one more thing that, for example, if you simply write 12.50 and you don't write $sign, then some marks can be deducted. So it's important that we also write contribution equals to $12.50 per unit. I'll also tell you the breakup. If you write the correct formula and if you give one correct stage of calculation, although if your answer is incorrect, but if you write the formula and if you give one correct stage of calculation, you will get 2 marks out of 3. Even if your answer is wrong, you have done a calculation mistake or your answer is not coming out correctly. But you have written the formula and you have given one correct stage of calculation, you will get 2 marks out of 3. Moving on to the next part. Part 2 says explain one limitation for CS of using break-even analysis. So limitation of using break-even analysis can be, so this is basically a 3-mark question. And you just need to give one limitation for CS. Up over here, we need to relate it with CS. This is not a general question. We need to relate it with the case study. So we can, I'll also tell you the breakup. For knowledge and understanding, you will get 1 mark. For application, you will get 2 marks. But you have to give your application from the case study. You have to apply from the case study. We can say limitation of break-even analysis can be that it assumes prices are constant, or it assumes all output is sold and does not take into account demand or demand fluctuations. Break-even analysis does not take into account demand or demand fluctuation, or you can also write it assumes that fixed costs do not change as output increases.
Break-even analysis assumes that fixed cost does not change as output increases, but fixed costs do change, can change practically. So this is wrong. In the real world, fixed costs can also change. And break-even analysis assumes no external influences can affect a business, whereas there are many external influences like monetary policy or fiscal policy, inflation. These things can affect the business. Tariff, these are not in control of the business. So this can be limitation of using break-even analysis. Application can be that it assumes all costs are straight line constant, whereas costs are likely to fall as output increases. It assumes price is constant, whereas most businesses will need to reduce price to sell more. It assumes all output is sold, which is unlikely for most businesses. Wastage, obsolescence can occur. Uh, we also need to relate it to the business, so we can say Yazim uses range of colors and sizes. May be impossible to do break even for each style of shoe size or color. Yazim over here is using different range of colors and sizes of shoes, and it may be impossible for Yazim to do break even for each style of shoe size or color. So this can be application from the case study. As we have seen above, that Yazim is using different ranges of colors, is trying to sell different ranges of colors and selling different sizes of shoes. But for such cases, when you are selling different categories or different types of products, it will be difficult for you to calculate break-even point for each size or each type of shoe. So this can be your application. Analyze two disadvantages to CS of adopting JIT approach to inventory management. I'll tell you the breakup over here in terms of marks. So it says analyze two disadvantages. This key term highlights that there are 2 marks for knowledge and understanding. If you simply write two disadvantages to CS of adopting JIT, you will get 2 marks. If you simply show knowledge of two relevant points, then you will get 2 marks. 2 marks are for application. You need to relate it in context to CS, to the business, to the case study, and then analysis. You need to develop analysis that identifies connection between causes, impact, or consequences of 2 points. Developed analysis that identifies connection between causes, impact, or consequences of 1 point. So 3 to 4 marks are for analysis. 2 marks for knowledge and understanding, 2 marks for application, 4 marks for analysis. So let me explain you in knowledge and understanding. We can say the drawback of JIT can be that orders made from suppliers as needed. Orders made product produced as required by customers. Produced as required by customers. And we can also say that if raw material is delayed, then
orders will also be delayed. So these can be possible two drawbacks of using JI. ठीक है. अब जाहिर है अगर आपका सप्लायर रॉ मटेरियल आपको टाइम पे डिलीवर नहीं करेगा, if the supplier does not delivers raw material on time, if the raw material is delayed, then orders can also be delayed, and customers then eventually go towards your competitors, will switch to your competitors, which will be drawback for the business. Eventually, it will be a problem for the business. So this can be your knowledge and understanding. दूसरे में हमने क्या बात करी है बेटा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर. आप प्रोडक्ट बनाओगे ही तब जब कस्टमर को जरूरत होगी. आप एक्सेस प्रोडक्ट बना के नहीं रखोगे. आप कभी कभार ऐसे हो सकते हैं कि अचानक से कोई आपके पास कस्टमर आ गया, अचानक से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कस्टमर को जरूर ज्यादा ऑर्डर्स की जरूरत पड़ी, लेकिन आप बोलोगे भाई मुझे तो टाइम चाहिए बनाने के लिए क्योंकि मैं बना के नहीं रखता, मैं ऑर्डर पे बनाता हूँ. आप जब मुझे बोलोगे मैं तो आपको बना के दूंगा. तो ये जाहिर अगर कस्टमर को अर्जेंट चाहिए होगा ऑर्डर, तो वो आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकोगे, आप उसको नहीं सेल कर पाओगे. तो ये आपके बिजनेस के लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा. और कस्टमर जो है वो अगेन मोस्ट प्रोबेबली फिर कंपेटिटर्स के पास चला जाएगा कि भाई आप जब ऑर्डर कस्टमर को नहीं दे सकते, तो कस्टमर बोलेगा कि भाई ठीक है, जब आप मुझे ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पा रहे तो मैं किसी और से खरीद लूंगा. ठीक है बेटा. तो हम ये बोलेंगे one disadvantage to CS of adopting a JIT approach is the increased risk of stockouts, which could negatively impact customer satisfaction. Since CS currently sells shoes to mass market of professionals and offer range of sizes and colors, relying on JIT means shoes are only produced when needed. ठीक है. अब यहाँ पे हमने ये बात करी कि the drawback of to CS of adopting to JIT approach is the increased risk of stockouts. जाहिर है कि ये हो सकता है पॉसिबल कि आपका जो इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाए, वो चला जाए, स्टॉक आउट हो जाए, स्टॉक खत्म हो गया, और ये इवेंचुअली आपके बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है. Since CS currently sells shoes to mass markets, जाहिर है अभी currently CS जो है वो masses को sell कर रहा है, and offer range of sizes and colors, relying on JIT means shoes are only produced when needed. अब अगर आप JIT पे रिलाई करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि शूज को आप तभी प्रोड्यूस करोगे जब आपको शूज की जरूरत होगी. If there is a sudden spike in demand or a delay in delivery from new local supplier, CS may be unable to meet customer needs quickly. This could result in lost sale and damage brand's reputation. ठीक है. आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी बता देना कि JIT होता है क्या, ब्रीफली, बहुत डिटेल में नहीं, ब्रीफली बताना कि JIT refers to in ordering inventory when there is a need for it, holding very limited or no inventory. फिर आप बोलोगे बेटा सेकंड डिसएडवांटेज इज रिलायंस ऑन न्यू अनटेस्टेड सप्लायर. जो मैंने दूसरी बात बोली कि भाई आपके सप्लायर जाहिर है अनटेस्टेड होते हैं, आपको पता नहीं होता, आपको उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है बहुत ज्यादा कि क्योंकि पूरी प्रोडक्शन उन पर डिपेंड कर रही है कि अगर वो डिलीवर करेंगे तो फिर CS प्रोड्यूस कर सकेगा. अगर वो टाइम पे प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे, टाइम पे प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तब ही CS डिलीवर प्रोड्यूस कर पाएगा. A second disadvantage is the reliance on new untested suppliers, which could introduce uncertainty and delays. Abir has suggested a supplier with whom CS has no existing relationship, which means trust and reliability are yet to be established. GIT requires frequent and timely deliveries, and any disruption could halt production. This is particularly risky given that CS is considering a shift from batch production to job production, where delays in material can directly delay the production of unique customer orders. ठीक है.
तो हमने थोड़ा सा केस से लिंक भी कर दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अबीर जो है वो करेंटली क्या कर रही है, वो नए सप्लायर की तरफ जा रही है। और जाहिर है अगर नए सप्लायर की तरफ जा रही है तो जाहिर है उन्होंने टेस्ट तो नहीं किया हुआ ना उन सप्लायर को, तो जाहिर है उन पर भरोसा भी करना मुश्किल है कि वो टाइमली डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। सो अबीर हैज सजेस्टेड अ सप्लायर विद whom CS has no existing relationship, which means trust and reliability are yet to be established. Trust or reliability अब established नहीं हुए, so it is yet to be established. GIT requires frequent and timely deliveries, and any disruption could halt production. This is particularly risky given that CS is considering a shift from batch production to job production, where delays in material can directly delay production of unique customer orders. So this is an 8-mark question where 2 marks are for knowledge and understanding, 2 marks are for application, and 4 marks are for analysis. There is no evaluation for 8-mark question. You don't need to evaluate. You just need to explain in detail with a relation to the case study. You just need to analyze the 2 drawbacks of using JIT approach to inventory management system. Now moving on to part D. Part D says evaluate the importance to CS of being a small business. So now we need to evaluate the importance to CS of being a small business. Again, for knowledge and understanding, there are 2 marks. For application, there are 2 marks. For analysis, there are 2 marks. For evaluation, there are 6 marks. So in a 12-mark question, evaluation is the most important part of your answer because it contains 6 marks. So for knowledge and understanding, you can simply write tell developed points like lifestyle, independence, opportunities, creative freedom, less reliance on others, expertise, unique selling proposition, personal satisfaction, personal services to customers, focus, easy to plan, easy to control, potential for growth, encourages innovation, entrepreneurship, may struggle obtaining finance, increased risk. So you just need to mention points for knowledge and understanding. अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि कैसे इम्पोर्टेंस हो सकती है एक स्मॉल बिजनेस की सीएस के लिए, क्योंकि सीएस एक स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मतलब इम्पोर्टेंस इस तरह से हो सकती है क्योंकि उसका फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा, इंडिपेंडेंस होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी, क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा, रिलायंस कम हो जाएगी ऑन अदर पीपल, आपके पास एक्सपर्टीज हो गया। अब अक्सर ये होता है कि नॉर्मली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना बेटा, वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि यार हमारे पास इस काम के लिए नॉलेज है, इस काम के लिए एक्सपर्टीज है, तो फिर वो उसमें फोकस करते हैं और उसकी उसी की तरफ काम करने पे मोटिवेटेड होता है जिसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है। जैसे अक्सर आपको आजकल टीचिंग और ये ट्यूशन सेंटर्स नजर आएंगे कि बहुत सारे टीचर्स मिलके खोल लेते हैं। कोई सैट पढ़ा रहा होता है, कोई ओ लेवल्स के टीचर्स होते हैं, वो मिलकर कोचिंग सेंटर बना लेते हैं। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, इसमें कोई खास कैपिटल भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसी सेम गोस फॉर रेस्टोरेंट्स एज वेल कि आप अच्छे शेफ हो, आपकी एक्सपर्टीज है होटल मैनेजमेंट में, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में, तो फिर आप अपना जो है वो एक बिजनेस खोल लेते हो, अपना एक रेस्टोरेंट बना लेते हो। तो फायदा उसमें ये होता है कि यार आप किसी अगर अगर एक टीचर है और वो कहीं पढ़ा रहा है तो उसको नुकसान ये है कि जाहिर है वो किसी के अंडर काम कर रहा है। अगर अपना बिजनेस बनाएगा तो उसके पास फुल कंट्रोल होगा, इंडिपेंडेंस होगी, मर्जी होगी, जब काम करना चाहे करेगा, जब काम करने का दिल ना हो नहीं करेगा, जब उसको लगे कि यार अभी इतना कोई मुझे खास फायदा नहीं नजर आ रहा काम करने में, इतनी कोई डिमांड नहीं है, वो अपना बिजनेस बंद भी करके जा सकता है, अपनी मर्जी से छुट्टियां ले सकता है, छुट्टियों पे जाना है छुट्टियों पे जा सकता है, काम करने का दिल है काम कर सकता है, ज्यादा काम करने का मूड कर रहा है ज्यादा काम कर सकता है। आप अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे, जितना कमाना चाहो कमाओगे, क्रिएटिव फ्रीडम होगा, क्रिएटिविटी आपकी मर्जी है, आप अपना बिजनेस जैसे रन करना चाहो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं तो ये बहुत ज्यादा चीज फेस करता हूँ। जब मैंने इनिशियल अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो काफी ऐसे कोचिंग सेंटर्स थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो कहते थे आप हमारे बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, आपने यूं बोलना है ये बोलना है। अब अगेन अगर आप किसी आप लाइक खुद कर रहा हूँ,
या मैं अपना कोई स्कूल हो, मेरे पास क्रिएटिव अगर फ्रीडम हो तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ा सकता हूँ, मैं जैसे पढ़ाना चाहूँ। मैं इंटरेक्टिव क्लासेस रखना चाहूँ, मैं इंटरेक्टिव क्लासेस रख सकता हूँ। मैं फिजिकली बच्चों को कोई एग्जाम्पल्स वगैरह शो करना चाहूँ, मैं एग्जाम्पल्स शो कर सकता हूँ। मैं बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैं बच्चों को साइट विजिट कराना चाहूँ, मैं फैक्ट्री विजिट कराना चाहूँ, मैं वो करवा के दिखा सकता हूँ कि भाई देखो असल में काम कैसे होता है बिजनेस के अंदर, जेआईटी असल में काम कैसे करता है, मशीन्स वगैरह ये जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं वो एक्चुअली किस तरह से काम करता है। तो आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम होगा अगर आप अपना बिजनेस बनाते हो। ठीक है बेटा, तो ये सिनारियो है। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में तो आप काफी इस तरह की बातें कर सकते हो, और काफी इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, उससे ना कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि कोई भी 2 पॉइंट आप बता दें या 3 पॉइंट आप बता दें, बट हम मार्क्स देखेंगे। तो क्योंकि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेटे 2 मार्क्स हैं, तो हमें कोई भी 2 डेवलप्ड पॉइंट्स बताने होंगे ऑफ रेलेवेंट की टर्म्स और फैक्टर्स दैट इज यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। कोई भी दो आपको डेवलप्ड पॉइंट्स बताने होंगे, ठीक है, जो आपके हिसाब से जरूरी होते हैं और इम्पोर्टेंस है जिनकी बिजनेस के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव फ्रीडम होता है, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो होता है, कि जब मर्जी काम करना चाहो आप कर सकते हो, और जितना काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो मतलब इस तरह से करके आप पॉइंट्स बना सकते हो। अच्छा, अब केस स्टडी से रिलेट करना भी आपके लिए जरूरी है, और मैं आपको इवैल्यूएशन भी बताऊंगा। अब केस स्टडी से कैसे हम रिलेट करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो क्या कहते हैं शूज बना रहे हैं, तो और उसके लिए क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शूज के अंदर अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी तो फिर जाहिर है इवेंचुअली आपके बिजनेस को प्रॉब्लम होगी। डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है, डिमांड के साथ अडाप्ट करना बहुत जरूरी होता है आपके बिजनेस के लिए। तो हम ये बोलेंगे कि बीइंग अ स्मॉल बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टू सीएस फॉर सेवरल रीजन। One key advantage is creative freedom it offers. One key advantage is creative freedom it offers. Creative freedom it offers. सबसे जो अच्छा ड्रॉबैक है हमारे बिजनेस के लिए वो है बेटा क्रिएटिव फ्रीडम। अब एप्लीकेशन की बारी आ गई, तो मैं एप्लीकेशन क्या करूंगा, बोथ यजीम एंड अबीर आर हाईली स्किल्ड शू मेकर। बोथ याजीम and Abir are highly skilled shoe maker. And as a small owner-led business, they can make quick decision about shoe design, production without needing approvals from others. जाहिर है अब उसको कोई प्रोडक्शन करनी है तो उसको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है इन दोनों को, कि नहीं जी अब अगर इवन आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आप खुद से नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई आइडिया है भी, कोई आपके पास क्या कहते हैं आप सोच रहे हो कि यार हमारे बिजनेस को ऐसे चलाना चाहिए या बिजनेस में ये होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ओनर को पहले पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर ओनर इजाजत देगा, अगर ओनर मानेगा, तो फिर आप वो फॉलो कर सकते हो मेथड। जब तक वो इजाजत नहीं देगा तो आप वो मेथड फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी विल बी स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ दे मूव टुवर्ड प्रोडक्टिंग प्रोड्यूसिंग यूनिक नीश मार्केट।
फॉर नीश मार्केट. अब जाहिर है ये इस तरह का क्रिएटिव फ्रीडम खासकर तब जरूरी होता है जब आप नीश को टारगेट कर रहे हो. When you are targeting a specific market segment, when you are not targeting masses, आप एक specific target audience को target कर. As Abir suggests, such creative control could help CS develop unique selling point, enabling them to differentiate their product and use strategies like price skimming to improve profitability. अब ज़ाहिर प्राइस स्किमिंग भी कर रहे हो, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी चाहिए, अपने प्रोडक्ट को यूनिक भी बनाना है, तो ये सब करने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है. और ये क्रिएटिव